Hi guys, welcome to Manu Education. So in this video, we will going to discuss about the grammar based question in your CMAT 2022 exam. So कितने मार्क्स के ला सकता है? So we can expect 10 to 11 question based on this grammar. Okay, so इतना weightage है. Almost we can say 40% to 50% weightage is for grammar based question. Okay, डिपेंड करता है ये ऊपर और नीचे जा सकता है. So maybe 40% or maybe 50% we can expect from this grammar based question. So what exactly you have to do is nothing but कितने टॉपिक्स मुझे प्रिपेयर करने हैं ग्रामर के रिलेटेड एंड व्हाट एग्जैक्टली यही टॉपिक मुझे प्रिपेयर करना है एंड आई विल गेट द आउट ऑफ मार्क्स. ओके, सो क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करना है? सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. द कैट इज वैगिंग डैश टेल्स. डैश टेल क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, इट्स टेल्स, इट्स. ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, इट इज दिया है और इट्स दिया है, तो चार ऑप्शन दिए. सो आउट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. इट्स ये ऐसा होना चाहिए, it is नहीं होना चाहिए. Okay, so it should be its. So some questions were based on fill in the blanks also. So filling the blanks में important is nothing but grammar based filling the blanks होती है. Okay, so you should know the verbs. Okay, verbs मालूम होना चाहिए, adverbs मालूम होना चाहिए. So parts of speech you should know. Okay, तो उसके बेसिस पे भी कुछ questions आते हैं. So let's see the different types of questions from your grammar. Okay, so first is nothing but figure of speech के related we can expect one or two questions. सेंटेंस करेक्शन रिलेटेड टू क्वेश्चंस डेफिनेटली श्योर शॉट आपको एक से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे. एरर डिटेक्शन वाइज वी कैन गेट वन और टू क्वेश्चंस, बट एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यू विल गेट. पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड वन क्वेश्चन, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में मिलेंगे एंड वी कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम द फिलिंग द ब्लैंक्स. सो इतने फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं एंड इफ यू मिस दिस टॉपिक डेफिनेटली यू विल लूज 5 to 6 मार्क्स. आपका पेपर डायरेक्टली हो जाएगा 25 के जगह पे आपका पेपर हो जाएगा 20 मार्क्स का. अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच नहीं किया है, ये टॉपिक्स नहीं किए ना, डेफिनेटली योर पेपर विल बी 20 तो नहीं, लेस देन 15 हो जाएगा. ओके, so that's why prepare these topics. These are the most important topics. One more thing in Manure Education, we used to do these topics first. ओके, बिकॉज ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट होती है, रूल्स याद करने होते हैं. सो दैट्स वाई वी टूक दिस टॉपिक्स फर्स्ट एंड देन वी विल गोइंग टू डिस्कस रेस्ट टॉपिक्स लाइक आरसी, पैरा जंबल, ये टॉपिक्स बाद में लेते हैं. सो बिकॉज दिस इज स्कोरिंग टॉपिक एंड वन मोर थिंग इज ईजिली टू रिमेंबर. सिर्फ रूल्स है, उसको रट्टा मारना है, दैट्स इट. उसको समझना है, दैट्स इट, इतना ही है. ओके, एंड सम क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस. ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है. वी विल सी सम एग्जाम्पल ऑल्सो. Okay, but before that, big announcement for all MBA aspirants. We have launched specific YouTube channel for related to MBA entrance. Okay, we will get updates related to MBA CET, CMAT, okay, NMAT, SNAP, all the MBA entrance in this particular channel. उसका नाम है Manure MBA entrance. Subscribe the channel immediately because after 31st December we will not going to upload any single video on Manure Education YouTube channel. Also, Manure launch batches for MBA Entrance 2022. If you are preparing for CMAT, MBA CET, TEAS or other examination, you can book your seat now. Okay, so we have two mode of teaching. One is nothing but online classes, and other is nothing but classroom coaching. If you stay near to Borivali, Vasai or Dadar, then you can join our classroom coaching. You have to contact on this particular number. If you want to join our online coaching, then you have to contact on this number 8828581455. You can also visit our website www.manureedu.com/MBA-entrance. What exactly you will get in this lecture is nothing but you will get live access for classroom, then e-books you will get or books you will get, then shortcut tricks will be provided to you for each every question, then doubt classes are there, recorded videos will be provided to you, topic tests, mock tests are there, then WhatsApp group will be formed for you because expert will definitely guide you in this whole journey. Okay, so 10,000 plus questions are there and mentorship will be provided to you. Just you have to contact on this number, or if you wanted to join classroom coaching, then we have these three centers. You can contact any one of them. Now let's solve some questions. So these are the questions which was asked in your CMAT 2021 examination. So the first question is pick out the correct sentence, write in ink. Okay, write in ink, ये write होता है. Okay, ये proper sentence है, write in ink. कुछ लोग बोलते हैं राइट विद इंक, दिस इज ऑल्सो राइट, बट राइट इन इंक इट इज साउंड करेक्टली. ओके, और ये बहुत अच्छा साउंड करता है. ओके, एंड दिस इज योर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. द स्टूडेंट यूज अ लॉट ऑफ इंक. अ लॉट ऑफ होता है क्या? इंक. अ लॉट ऑफ नहीं होता है. ओके, दिस इज अ इंक पेन. इज अ नहीं आएगा. ओके, दिस इज रॉन्ग. हैव योर इंक फिनिश, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग.
So only option A is your right. Okay, rest are wrong. Filling the blanks, okay, this is again related to your filling the blanks related to your nothing but your parts of speech. Okay, and some verbs also there. Let's solve second number question, filling the blanks related questions. So this question is related to your parts of speech. When I had visited them, she had been working for 6 months. Okay, so had been आना चाहिए, she was working for 6 months नहीं आना चाहिए. Okay, when you are mentioning 6 month मतलब प्रीवियस डेटा मेंशन कर रहे हो. ओके, वर्किंग फॉर 6 मंथ मतलब प्रीवियस डेटा वर्क मेंशन कर रहे हो. सो इन दैट टाइम यू हैव टू गिव हैड बीन. ओके, हैज बीन नहीं आना चाहिए. ओके, विजिटेड बोला है and were now भी नहीं आना चाहिए. So that's why option A is your right answer. Now let's solve next question. This question is related to your sentence correction, or we can say nothing but this is nothing but error detection. You have to find out error from this sentence. So the sentence is, if she will be promoted, she will get a higher salary. Okay, अगर इसमें first इसमें अगर error है, then you have to mark A option. If second में error है, then you have to mark B option. Third में error है, then you have to mark C option. And अगर error नहीं है, then you have to mark D option. So the right answer is A, just because of whenever your condition is given. Okay, so condition if, अगर if और if ऐसा दिया रहता. Okay, if मतलब nothing but this is nothing but your condition. Okay, so condition clause होगा, then in that case will be is not used, because यहाँ पे simple यहाँ पे use करना पड़ेगा is. If she is promoted, she will get a higher salary. Future tense नहीं use करते हम लोग अगर conditional clause होगा तो. Okay, if अगर आता है तो वहाँ पे will की use करना है. If she is promoted, she will get a higher salary. Option A is nothing but your right answer. Or you can say statement A में आपका wrong है. So this were the some selected questions which was asked in CMAT 2021 examinations. So if you want such more questions, you can join our institute. So if you wanted to join our institute, then we have two mode of teaching. One is nothing but online, or we can say live classes. Another is nothing but classroom coaching. So you can join by using contact to this number 8828581455 for online. And if you wanted to join our classroom coaching, then we have 3 centers, Borivali, Vasai and Dadar. You can contact to these centers respectively. Also, you can follow us on social media also. So we have on YouTube, Facebook, Instagram and Telegram. We have specific channel on YouTube, Man Your MBA Entrance. You can subscribe the channel immediately. Thank you so much and all the best.